sorry. सॉरी ओके सो देखो ठीक से यहाँ पे फिर इसका मतलब ये हुआ कि वी वांट टू फाइंड आउट द एक्टिविटी we want to find out the nuclei number of nuclei at an instant when the activity is actually given to be 2.0 microcurie बराबर तो उसके लिए हमने क्या किया एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो यूज किया देखो a इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू n ये इक्वेशन है तो इसमें से हमको मिलता है n इज इक्वल टू एक्टिविटी अपॉन लैम्बडा करेक्ट है तो यहाँ पे एक्टिविटी जो दिया हुआ है वो मिली क्यूरी में दिया हुआ है इसलिए वो 2.0 जो है तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ दैट इज माइक्रो क्यूरी तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ हो गया और क्यूरी जो होता है 1 curie is always equal to 3.7 into 10⁻10 becquerel and that's why we can just replace it in this way here and that is to be divided by this lambda which is obtained in the last part of this sum which is 2.95 into 10⁻⁻8 per second okay and once we just calculate all these things we can just know that this value comes out to be 2.508 into 10⁻12 nuclei which is already there in this option it's okay we can write it as 2.51 okay ये जो इसको approximate करके हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.51 ऐसा लिख सकते हैं and that is multiplied by 10⁻12 that is the number of nuclei which are present at that instant when its activity becomes equal to 2.0 millicurie okay microcurie sorry and now the third part of this question we want it to be that what will be the activity after 1 year okay so how will you find out the activity after 1 year so using this equation that a t matlab activity at any time instant is always equal to the activity initial activity multiplied by e raised to minus lambda t ये equation हमारे पास है already तो यहाँ पे t के बदले क्या आने वाला है 1 year आने वाला है और इस इक्वेशन को हम log के फॉर्म में भी लिख सकते हैं नो डाउट so if we want to write it in terms of the log then we can just be able to express it as lambda is equal to तो यहाँ पे 1 upon t into log to the base 10 of the ratio of initial activity to the final activity that's it actually ये फॉर्मूला जो है वो in terms of number of nuclei है but it's okay if we use it for activity because number of nuclei and activity just proportion में ही होता है they are just in proportion and that's why we can just use it here and now if we just take this t in that side then we can just be able to get that lambda into t which is equal to अच्छा और ये यहाँ पे एक 2.303 फैक्टर भी आता है आपको याद होगा yes in order to convert this log to the base e into the log to the base 10 करेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे 2.303 आएगा वो भी हमको याद रखना है ठीक से so this is the formula for finding lambda if you know t and t if you know lambda no doubt but we can use this formula to find out this activity at time instant t if initial activity is known okay by taking the antilog of this here so we'll use this here so lambda into t upon 2.303 okay which is going to be equal to log of a naught upon at to the base 10 okay तो ये हमको फॉर्मूला यूज करना है जिसमें अभी देखो लैम्बडा कितना दिया हुआ है तो वो हम डाल देंगे यहाँ पे वो दिया हुआ है 2.95 into 10 raised to -8 sorry -8 हाँ राइट ओके एंड देन टाइम जो दिया हुआ है 1 ईयर अभी देखो 1 ईयर जो है तो वो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो लैम्बडा है वो पर सेकेंड में है ऑलरेडी राइट और उसकी वजह से यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा टाइम को 1 ईयर के अंदर सो 1 ईयर मतलब कितना होता है 365 days and 1 day is actually equal to 86400 seconds so we have to use this here
and that is to be whole divided by 2.303, which is already there, and that is to be equal to, so this is going to be equal to log of a naught upon 80. Okay, अभी हमको 80 तो निकालना है, but a naught is already given. How much it is given here is, just see it in that question. तो अभी का नाउ मतलब क्या, अभी का ना, तो अभी का एक्टिविटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने 2.0 माइक्रो क्यूरी. तो अगर वो माइक्रो क्यूरी में दिया हुआ है, सो इट्स ओके इफ वी फाइंड इट आउट इन माइक्रो क्यूरी ओनली. 80 को भी हमको माइक्रो क्यूरी में ही फाइंड करना होगा. So let us try to find out 80 also in microcurie. So A naught also has to be put in the same units, that is microcurie. That means 2.0. तो इसको हम यहाँ पे A naught के बदले simply 2.0 डाल देंगे, और जो 80 है तो वही हमको निकालना है यहाँ पे. We will try to find it out. So now we'll just solve this further. अभी इसके बाद का जो पूरा पार्ट है वो कैलकुलेशन बेस्ड है. So let us do that fast. 2.95. Yes. So see here, this is okay. So 2.95 multiplied by 365. Okay, this is 365, and that is again multiplied by 86400, which happens to be 93031,200. Okay, and that is to be divided by 2.303 actually. So this is 2.303. okay, and what we get here is simply 403,95657.83. okay, but we want only 4 digits. okay, so first 4 digits हमको सिर्फ चाहिए. तो उसके लिए देखो ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स पीछे लेके जाना पड़ेगा. करेक्ट है. सो 7 डिजिट पीछे लेके जाने का मतलब है 10⁻⁷ वहां पे आ जाएगा. सो वी कैन जस्ट अप्रोक्सीमेटली राइट इट एज 4.0395. moreover we can write it as 4.04 directly. okay, 4.04 into 10⁻⁷. okay, so here it comes out to be 4.04 into 10⁻⁷. But don't forget that this 10⁻⁻8 has not been taken into calculations, so that's why it will be 10⁻⁸ kept as it is here in the left hand side, so that we can get this to be log of the ratio of this 2.0 upon 80, and that is to the base 10 obviously. okay, so this 10⁻⁷ and 10⁻⁸ कैंसिल होके 10⁻⁻1 बचता है. ठीक है ना, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट और पीछे की तरफ मतलब राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.404. okay, so 0.404, and that is going to be the log of 2 upon 80. okay, and in order to find out 80 here, we will just have to take the anti-log of this. तो log इस तरफ हम लेके जाएंगे तो वो anti-log बन जाएगा actually. So next part we'll do it here. So the next part will be anti-log of 0.404 which is going to be equal to 2 upon 80. correct है. So find out anti-log of this 0.404. yes, if you have the log table you can easily do it. So I have a log table, and if you just find out this log of 0.404, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 40 का देखना पड़ेगा 4 के अंदर. करेक्ट है. यस, सो 40 के 4 में देखो, 40 की लाइन में 4 में कितना है, देखो 40 का 4 में मिल रहा है 2535. चेक. okay, 2535. so we'll write it as it is 2535, but we have to write the point here.
after 1 decimal point because there is 0 here before, right? So इसलिए फिर यहाँ पे 2.535 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 divided by 80 होगा, but we want 80 ना, तो 80 निकालने के लिए फिर क्या करना है, इस 2.535 को नीचे डाल देना है, तो ये 2 upon 2.35 535 will actually be equal to the final answer, which is going to be the activity after 1 year. Okay, so it happens to be, अच्छा अभी 2 divided by 2.535 can be done by log table or calculator in our case. So 2 divided by 2.535, which comes out to be 0.7889. Okay, so it is 0.7889, which can approximately be written as 0.79. Okay, and this is actually going to be the final answer. This is the activity, also obviously in microcurie again. Why? Because already जो given value जो था वो भी माइक्रोक्यूरी में ही था, 2 जो हमने यूज किया नहीं वो भी माइक्रोक्यूरी में है करके, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमको मिलने वाला है वो भी एक्चुअली माइक्रोक्यूरी में ही मिलेगा, नो डाउट, and that's why we can just get this as a final answer. So let us check this. 0.7889 microcurie. Yes, we are correct. 0.7889. You can write it as 789, no doubt, no problem. Yes, okay. So this is all about the yesterday's question. Now let us move to the next question. Okay, let us see the question number 21. Yes, just read it fast. Source contains 2 species okay, sorry. Okay, a source contains 2 species of phosphorus nuclei, 32, whose half-life is given to be 14.3 days, and the second phosphorus is 33 with atomic mass number 33, whose half-life period is given to be 25.3 days. At a time t equal to 0, 90% of decays are from phosphorus 32. How much time has to be lapsed for only 15% of decays to be from phosphorus 32? Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे okay, see here, source contains 2 species of phosphorus nuclei, 32 and 33. इन दोनों का half life already दे रखा है. Okay, so see carefully, the half life of first phosphorus is given to be okay, so phosphorus का first phosphorus जो है जिसको हम बोल रहे हैं P, sorry, okay, P32 बोल सकते हैं उसको, उसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 14.3 days. Okay,
यस, एंड दूसरा जो फॉस्फोरस दिया हुआ है 33 एटॉमिक मास नंबर वाला, उसका जो हाफ लाइफ है तो वो दिया हुआ है एक्चुअली ओके 25.3 days. ओके, यस, एंड एट टाइम t इक्वल टू 0. ओके, अभी देखो एक सिंपल सी बात समझो यहाँ पे ठीक से, कि अगर मान लो कि हमारे पास एक सैंपल है जिसके अंदर मिक्सचर है, दो चीजों का मिक्सचर है, एक फास्फोरस 32 वाला और दूसरा फास्फोरस 33 वाला, ठीक है. सपोज दैट दिस इज द टाइम लाइन. ये एक टाइम लाइन है जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फास्फोरस 32 भी है, प्रेजेंट है. कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फास्फोरस 32 के है और कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है फास्फोरस 33 के है. ओके, अभी दोनों जब रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे और रेडियो एक्टिव डिके होंगे, रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, तो क्या होगा कि सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि फास्फोरस जो फर्स्ट जो है 32 वाला जो फास्फोरस है, तो उसका उन्होंने बोल के रखा है कि 90% ऑफ द डिकेज आर फ्रॉम दैट फास्फोरस ओनली. करेक्ट है. तो पहला वाला जो फास्फोरस है उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका एक्टिविटी कितना है, 90% है. मतलब 90% इतने जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो 32 फास्फोरस के रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं. और उस समय फिर क्या होगा ना कि 10% इतने ही सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 33 वाले जो एलिमेंट के शो करेंगे, रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है, इन द इनिशियल केस. बट नाउ एज द रेडियो एक्टिविटी रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर बोथ ऑफ देम, तो दोनों का जब रेडियो एक्टिविटी रेट डिक्रीज होता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये 32 वाले फास्फोरस का परसेंटेज एक्टिविटी धीरे धीरे कम 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 होता जाएगा. और एक एक समय ऐसा आएगा कि जब उन्होंने बोला है यहाँ पे कि हाउ मच टाइम हैज टू बी लैप्स फॉर ओनली 15% ऑफ डिकेज टू बी फ्रॉम 32 फास्फोरस ऑफ 32 मास एटॉमिक मास नंबर. तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा होगा, यहाँ पे सपोज ये टी इतना टाइम सपोज उसके लिए लगता है, तो वो ये टी टाइम ऐसा होगा कि जिसके बाद यहाँ पे 32 वाला जो फास्फोरस है, ठीक है, उसका एक्टिविटी कितना बन गया, सिर्फ 15% बन गया. दैट मीन्स ओनली 15% ऑफ atoms or nuclei of 32 mass number are showing the activity in this case here, whereas remaining मतलब 85% of the number of nuclei out of the total will be show of the 33 atomic mass number phosphorus will be showing radioactivity. तो इसका मतलब इस टाइम के टी के बाद क्या हो रहा है कि ये जो परसेंटेज है, ये जो 32 वाले फास्फोरस का जो एक्टिविटी है, इट रिड्यूसेस फ्रॉम 90% to 15% ओनली, एंड 33 एटॉमिक मास नंबर वाले फास्फोरस का जो एक्टिविटी है इट रिड्यूसेस फ्रॉम 85 टू 10% to 85 एक्चुअली. ठीक है, सो एंड दैट्स व्हाई in this way we have to find out this time after which this happens. ओके, तो ये सब होने के लिए टाइम कितना लगेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. तो उसके लिए देखो हमको एक्टिविटी और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमको दो बार यूज करना पड़ेगा. जैसे देखो हमारे पास एक्टिविटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी है कि एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल एक्टिविटी दैट इज ए नॉट इनटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा इनटू टी. करेक्ट है, ये इक्वेशन हमारे पास है ऑलरेडी. ठीक है, बट यहाँ पे जबकि दोनों का हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग है, देख सकते हो ठीक से, दोनों का हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग है, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का लैम्बडा भी अलग अलग होगा, मतलब रेट कांस्टेंट जो है डिके कांस्टेंट भी अलग अलग होगा. सो हियर लैम्बडा 1 वी कैन से द डिके कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट फास्फोरस एंड लैम्बडा 2 कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिके कांस्टेंट ऑफ द सेकंड फास्फोरस. एंड इनिशियल जो है इनिशियल एक्टिविटी जिसको हम ए नॉट बोलते हैं, तो ए नॉट ऑफ दिस फर्स्ट फास्फोरस विल बी डिनोटेड बाय ए नॉट 1, चलेगा ना, ए नॉट 1 उसको बोल देंगे. and the initial activity of this second phosphorus will be denoted by a naught 2, chalega, no doubt. And then again after time t,
सपोज जो भी एक्टिविटी बनता है तो वो फर्स्ट फॉस्फोरस का जो फाइनल एक्टिविटी है उसको हम बोल सकते हैं 81, ओके, 80 ऑफ 1, मतलब फर्स्ट वाले फॉस्फोरस का फाइनल एक्टिविटी, और यहाँ पे सेकेंड वाले फॉस्फोरस का जो फाइनल एक्टिविटी है उसको हम 80 सफिक्स 2 ऐसा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे जो ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन हम 2 बार यूज करेंगे, ठीक है। वी कैन यूज दिस इक्वेशन 2 times, फर्स्ट फॉर दिस phosphorus of atomic mass number 32 and second time for the phosphorus of atomic mass number 33, okay. So let us construct the equation. So first equation will be constructed as this 81, मतलब the activity after time t will actually be equal to a naught 1 into e raised to minus lambda 1 into t, okay. So this is the first here, 81 means the final activity or activity after time t for the first phosphorus is going to be actually equal to the initial activity of the same phosphorus, ठीक है, into e raised to माइनस ऑफ लैम्बडा। अभी लैम्बडा भी तो अलग अलग है दोनों के लिए, तो ये फर्स्ट वाले का लैम्बडा हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो वी कैन कैल इट एज लैम्बडा 1, सो हियर इट इज गोइंग टू बी लैम्बडा 1 into t, t is common for both, correct है। So this is going to be equation number 1 we can say, and at the same time we can just construct the second equation. Here we can say that this final activity of second phosphorus is equal to the initial activity of second phosphorus into e raised to minus of lambda 2 into t, that's it. So we can just construct that equation and get it as 82, okay, which is going to be equal to a naught 2 into e raised to minus of lambda 2 into t, that is given as equation number 2 here, okay. Now just let us divide these two equations, because यहाँ पे जो है a naught upon a naught 1 upon a naught 2 can be found out just by 90% divided by 10%, okay. And here this 81 and 82 इन दोनों का जो रेशियो है वो भी हमको आराम से मिल जाएगा, that is 15% upon that is 82 per 85%, that's it. So we can just do it taking the ratio of 1 and 2, we get that 81 upon 82 going to be equal to, here it is going to be a naught 1 upon a naught 2 into, तो अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, e raised to minus lambda 1 into t divided by e raised to minus lambda 2 into t, correct है। So now we can just put the values here. 81 का वैल्यू कितना है, देखो 81 का मतलब होगा 15%, तो ये 15% का एक्चुअली मतलब क्या है, 15 अपॉन 100 है, नो डाउट, but it's okay if we just keep 100 because it is going to be cancelled when we take the ratio. So 15 upon 100 divided by 85 upon 100 comes out to be simply 15 upon 85, no doubt. This is the ratio of final activities of both of these phosphoruses. And now the ratio of initial activities can be found out to be simply equal to 90% divided by 10%, which happens to be actually 90 upon 10, because 100 can be cancelled once again here also. So this is 90 divided by 10, okay. And this e raised to minus lambda 2t gets in the numerator and becomes positive, and hence we can say that this will be e raised to lambda 2t minus lambda 1t, correct है, according to the laws of indices, that is a raised to m upon a raised to n actually happens to be a raised to m minus n, correct है। And so we can just get this, and even इससे भी आगे जाके हम इस न्यूमरेटर में से ये जो lambda 2 minus t minus lambda 1t मिल रहा है उसमें से t कॉमन ले सकते हैं, देखो t can be taken common from this. So let us do the next step here. So here we can just cancel
15 and 85 by 5, and we'll be left with 5 threes are and 5 17s are correct hai? And this 10 and 90 can also be cancelled, leaving behind 9 here in the numerator correct hai? So we can get this in the as of next step 3 by 17, which is equal to 9 into e raised to lambda 1, sorry, lambda 2 minus lambda 1 into t correct hai? Yes, and then we can just get this in the denominator, so that we can get this as 9, ये 3 को 9 के साथ cancel कर सकते हैं, so that 3 will be left here, and this 3 also can be taken in the denominator so as to get it as 1 upon 51. Okay, so this is 1 upon 51, which is going to be equal to e raised to lambda 2 minus lambda 1 into t, and now we can just take the log on both sides to the base e here. Okay, so that log to the base e of 1 upon 51, which is going to be, ये पूरे का अगर log लेंगे तो ये जो पावर है वो पावर सामने आ जाएगा. So you can just write it as lambda 2 minus lambda 1 into t into log of e, okay, which is going to be 1. तो हमने log to the base e लिया है, इसलिए वो 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा. अच्छा, ये एक बात और याद रखो कि 1 अपॉन log of 1 upon x is always equal to minus of log of x. ये पता है सभी को? Because log of 1 upon x actually can be written as log of x raised to minus 1. Do you agree with this? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, x raised to minus 1 ऐसा लिख सकते हैं. और जैसा कि हम जानते हैं log के अंदर जो पावर होता है वो हमेशा इधर सामने कुछ आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये माइनस साइन जो है सामने आ जाएगा और ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ x. So according to this, we can just get that this log of 1 upon 51 will actually be equal to minus of log of 51. Correct है? And hence we can just get in the next step, that is minus of log of 51. Okay, and that is actually going to be lambda 2 minus lambda 1 into t, because log e is going to be 1. ये log e जो है वो 1 बन जाएगा सिंपली, और हमको इसमें से t निकालना है, भूलो मत. अब लेकिन lambda 1 और lambda 2 भी तो नहीं पता है. Yes, lambda 1 and lambda 2 can be put here as 0, जैसे कि हमको पता है ऑलरेडी कि lambda is always equal to 0.693 divided by t half. करेक्ट है? ये फॉर्मूला हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड और लैम्डा के बीच में का रिलेशनशिप. तो ये फॉर्मूला अगर हम 2 बार यूज करेंगे ना तो हमको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों मिल जाएंगे. और ये मत भूलो कि यहाँ पे बेस जो है वो e है यहाँ पे, राइट? तो बेस e होने की वजह से यहाँ पे भी e आएगा. बट ऑलरेडी वी नो दैट व्हेनेवर वी वांट टू चेंज द बेस फ्रॉम e to 10, what we have to do is we have to multiply this whole thing by 2.303. So we can just get this as minus of 2.303 into log of 51 to the base 10, and this will actually be equal to lambda 2 minus lambda 1 into t. But then this minus sign, अगर हो ये minus sign यहाँ पे हमको नहीं चाहिए तो क्या करो, ये पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो. तो RHS जो है तो उसके अंदर ये जो है ये लैम्डा 2 और लैम्डा 1 शफल हो जाएंगे, सिंपली उल्टा हो जाएगा. तो we can just get rid of that minus sign and say that it will be 2.303 into log of 52 to the base 10. अच्छा, ये log of 52 to the base 10 तो निकाल सकते हैं आराम से log के टेबल में से. चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, और यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 मिल जाएगा. ये समझा उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे हमने
मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इस तरफ ये जो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा बस। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 इंटू लॉग ऑफ, yes, log of 52 to the base 10. We have a log table. We can just find out the log of 52 to the base 10 easily. 52 के सामने 0 में लिखना है 7160. Okay, 7160, but that will be 1 point actually. So here it is 1.7160, which is going to be equal to, अरे log of 51 ना, हाँ sorry, log of 51 is 7076. Yes, 7076. Yes, it is not 52, actually it is 51 only. Yes, ये भी 51 ही है एक्चुअली, 2 के जैसा दिख रहा था इसलिए। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे ये जो है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, इसको हमको अभी सॉल्व करना पड़ेगा आगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, इनके बदले यहाँ पे हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये देखो इधर, ये जो है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, करेक्ट है। सो व्हाट विल बी द लैम्डा 1, वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, it is going to be 0.693 divided by half life period of first phosphorus. Okay, what is the half life period of first phosphorus? See here, it is given to be 14.3 days, right? So here it can just be written as 14.3 days. Okay, minus here lambda 2 can be written as again the same formula, that is 0.693 upon the half-life period of that phosphorus, second phosphorus, which is already given to be 25.3, and that is in days. So that is in days only, so time will also come in days only, and it's okay. So we can give this as 25.3, and that is to be whole multiplied by time, that is t here. Okay, and then we can just simplify this further, so as to get it as 2.303 into 1.7076 is equal to, इसमें से देखो 0.693 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा, राइट। सो 0.693 has been taken common, and what we are left with is 1 upon 14.3 minus 1 upon 25.3, and that is multiplied with time, that is t. Okay, so here we can just take the reciprocals of both of these numbers. So let us do that. So 2.303 into 1.7076 kept as it is equal to 0.693 also kept as it is, and just take the reciprocal of this 14.3 using the reciprocal number table. तो जो रेसिप्रोकल नंबर का जो टेबल हमारे पास है, तो उससे हमको ये मिलता है 14.3 का रेसिप्रोकल देखो 1.4 का 3 में जो बन रहा है 6993. ओके, राइट इट एज 0. एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻1 ऊपर -1 बन के ऊपर चला जाएगा, और रेसिप्रोकल नंबर में जो रेसिप्रोकल नंबर हमको मिल रहा है 1.43 का, तो वो ऑलरेडी मिल रहा है 0.6993, but because of this 10⁻1 it will just get shifted 1 decimal digit at the left, and we'll get it finally as 0.06993. okay, so 0.06993, this is the reciprocal of this first number here, and the second number is going to be 25.3, उसका भी reciprocal हमको देखना है. So how much it comes out to be, see,
ओके सो 2.5 का 3 में देखो फटाफट, 2.5 का 3 में वो बन रहा है 3953. ओके 3953. So you can write it as 0.03953, and that is to be multiplied with time t, which is to be found out. And now we can just take the difference of these two numbers and get this 2.303 into 1.7076, which is equal to 0.693 and multiplied by the difference of these two, which can be easily found out by using the calculator. Yes, see here 0.06993 minus 0.03953. Okay, 3953, which happens to be actually 0.0304. Okay, 0.0304. So it's going to be 0.0304, and that is multiplied with time t. So finally we are going to get time t here to be simply equal to, ये पूरा जो है वो नीचे लेके जाना पड़ेगा हमको, तो बनेगा 2.303 into 1.7076 divided by 0.693, and that is multiplied with 0.30034. Okay, just work out all these calculations, and that is final answer. See here 2.303 multiplied by 1.7076, which happens to be 3.9326. Okay, that is to be divided by 0.693, and which is this, and that is to be again divided by 0.0304. Correct? It comes out to be 186.6694. मतलब 186.7 approximately. Okay, so 186.7. So it will be 186.7, and that is going to be in days. Remember. Okay, तो वो days में ही रहेगा. Yes. So let us take the screenshot of this if you want. Okay, finish with this. Yes. So let us see the next question. Okay, this is the question we have done just now. 186.6 days is going to be the final answer. Chalo, ठीक है. So next one is here before the year 1900. Okay, the activity per unit mass of atmospheric carbon due to due to presence of C14, which is averaged about 0.55 becquerel. Okay, so before year 1900, the activity per unit mass of atmospheric carbon due to the presence of carbon 14, whose life averaged about 0.55255 becquerel per gram of carbon atom. Okay, what fraction of carbon atoms were C14? And also the second question is asked in the same way here. And
archaeologist specimen containing 500 milligram of carbon shows 174 decays in 1 hour. Then what is the age of that specimen? Assuming that its activity per unit mass of carbon when the specimen died was equal to the average value of the air. And also it's given that the half-life of carbon 14 is 5730 years. Okay. चलो ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. We can do it. बट और कितना एक ही बाकी है ना, 2 सम्स बाकी है. चलो ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट टाइम कर देंगे, नो प्रॉब्लम. ओके चलो ठीक है. बट जो हमने किया अभी आज के लेक्चर में, उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो जरूर. यस एनीबॉडी?